Morning, sir. କେତେ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଆମର? Sir, ସେ ଚାପ୍ଟର ସରିଯିବ ପ୍ରାୟ 238 ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାରାମିଟର ସରିଥିଲା। ଫର୍ ଅପଡେଟ୍ କ୍ଲସ୍ ଫର୍ ଅପଡେଟ୍ ଟା ସାର୍ ହବ। ଫର୍ ଅପଡେଟ୍ ପଢା ହଉଛି। the syntax ହଁ is ସାର୍ ଫର୍ ଅପଡେଟ୍। ତାପରେ ତାର ବଡି ରହିଲା, ତାର ସିଲେକ୍ଟର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଫର୍ମ ଫର୍ ଅପଡେଟ୍ ଅଫ୍ କଲମ୍ ରେଫରେନ୍ସ ରହିଲା, ରାଇଟ୍? use explicit locking to deny access to other session for the duration of a transaction. Lock the rows before the update or delete, right? मोर अपडेट आउ डिलीट करिया पूर्व मते जदी कुहा जाय जदी लॉक करिया पई ताले मु फॉर रे मु लॉक टाकू करि पारि। If there are multiple sessions for a single database, there is a possibility that the row of a particular table were update after you open your cursor. You see the update that data only when you reopen the cursor. Therefore, it is better to have lock to the rows before you update or delete rows. You can lock the rows with the for update clause in the cursor query. The syntax is column reference is a column in the table against which the query is performed. A list of column may also be used. No wait returns an Oracle server error if the row are locked by another session. जदि मते नो वेट जदि यूज करी ताले से एरर थ्रो करिवो जोरा कि लॉक करूची अनदर सेक्शन को जदि लॉक करिया पे कुआ जाय ताले सेठी मते एरर थ्रो करी। The for update clause is the last clause in a select statement even after order by. If it is exit when you want to query multiple table, you can use the for update clause to confine row locking to particular tables. For update of column name locks row only in table that contain column name, right? The select for update statement identifies the row data to be updated or deleted and then lock each row in the result set. This is useful when you want to base an update on the existing value in a row. In that case, you must make sure that the row is not changed by another session before the update. The optional no wait keyword tells the Oracle server not to wait if the requested row have been locked by another user. Control is immediately returned to your program so that it can do other work before trying again to acquire the lock. If you omit the no wait keyword, the Oracle server wait until the rows are available, right? लॉक कला माने जे जाय तमरो करंट सेक्शन रो कामटा न सरीची से जाय से वेट करिवो करंट सेक्शन रे सला पर देन नेक्स्ट सेक्शन टाकू से अपडेट से करेबो बुझला। फॉर एग्जांपल जेम देखि डिक्लेयर कर्सर गोटे डिक्लेयर कला इज सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 80 फॉर अपडेट ऑफ सैलरी नो वेट, राइट? If the Oracle server cannot acquire the lock on the row, it need to select for update operation. It wait identify indefinitely. Use no wait to handle such situation if the rows are locked by the another session and you have specified no wait opening the cursor result in an error. You can try to open the cursor later. You can use wait instead of no wait. Specify the number of second to wait and and then determine whether the row are unlocked. If the row are still locked after n second, an error is written, right?
जदि तुमर लॉक टा जदि n सेकंड जाई तुम जदि न हला ताले से एरर टा रिटर्न करी हला बुझला जेमि तुमर गोटे वेबसाइट रहउनी जे जेतरे फॉर्म फिलअप करूछ धर पेमेंट मोड रे से दे दियो 30 सेकंड किबा 50 सेकंड 50 सेकंड भीतर जदि तुम पेमेंट न करछ से तुमको फोन ट्रांजैक्शन पूरा कैंसिल कर दोछ राइट विशेष करी ओटीपी रे जेतरे ओटीपी एंट्री करछ से टाइमिंग दोछ It is not mandatory for the for update of clause to refer to a column, but it is recommended for better readability and maintenance. Where current of clause syntax where current of cursor, use cursor to update or delete the current row, include for update clause in the cursor query to fast lock the rows, use the where current of clause to reference the current row from an explicit cursor, update employee set salary equal to where current of cursor nata se dala iti dekha kona seta. The where current of clause is used in conjunction with the for update clause to refer to the current row in an explicit cursor. The where current of clause is used in the update or delete statement, whereas the for update clause is specified in the cursor declaration. You can use the combination for updating and deleting the current row from the corresponding database table. This enables you to apply update and delete to the row currently being addressed without the need to explicitly reference the row ID. You must include the for update clause in the cursor query so that the row are locked on open, right? In the syntax is cursor is the name of a declare cursor. The cursor must have been declared with the for update clause. For update clause जेतले यूज करे कर्सर टा से निहाती डिक्लेयर करिबा बाउंस एटा हला implicit quiz एटा implicit cursor are declared by Pl Sql implicitly for all DML and Pl Sql select statement. The Oracle server implicitly open a cursor to process each SQL statement that is not associated with an explicit declare cursor, that is true or false. এটা কোন হবো ট্রু অর ফলস ট্রু হচ্ছে হ্যাঁ এটা তার সামারি এটা রিভিউ হ্যান্ডলিং এক্সপ্রেশন আমি কালি পড়িবা এটা এরর হ্যান্ডলিং তারে जो pls आपण जो इंडेक्स बाय pls इंटीजर और इंडेक्स बाय आउट बुलियन इंटीजर ना कोन थला बुलियन इंटीजर हां सर द डिफरेंस कोन सेटा कोटा कोटा दीटा तो सेम pls इंटीजर आ बुलियन इंटीजर ना कोन थला बुलियन इंटीजर टा होची प्री डिफाइंड हला बुलियन डाटा टाइप टा सेटा होची प्री डिफाइंड सेटा केवल तमरो ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करिवो हला माने ता भीतर जहां भी एक्सप्रेशन दबो सी तमरो विशेष करी बुलियन एक्सप्रेशन रे तमरो लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए लॉजिकल जिंस जेमति धर मोर num1 is greater than to 5 लॉजिकली मोर ट्रू होची ना नहीं तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करिवो बट जो जोटा इंडेक्स इंटीजर टा सेटा होची कोन इंटीजर वैल्यू ऊपर तमरो कामटा करी सी भी सही रिजल्ट दबो बट इंटीजर वैल्यू ऊपर बट एटा मोर लॉजिकल ऊपर कामटा करी बुझला आज अगले कर दी प्रैक्टिस करो हां हां हे गेला तो सब हां सर हे गेला सब हां आउ देबी आउ एई शनिवार पर पुणी आउरी देबी हला ए हैंडलिंग एक्सप्रेशन ता हम काली पढिबा एटा एरर हैंडलिंग खाली हला काली पढिबा बुझला ओके